So hello everyone and welcome to Wise IAS, your true friend in UPSC preparations. In this series of polity, today we are going to deal with part 3 of the Constitution, or you can say the most important part of Indian Constitution. So before we begin with this lecture, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी टूल किट प्रिपेयर करके अपने साथ रखें और फिर इस लेक्चर को सुने। दैट वुड बी मोर फ्रूटफुल फॉर यू पीपल। तो व्हाट शुड बी देयर इन योर टूल किट? द बेयर एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक योर हाइलाइटर, कॉपी एंड पेन. All these things should be with you. You can just pause the video, bring all these items on your study table and then start it again. So, continuing in the polity series, today's lecture is very important. We are going to start part 3 of Indian Constitution. We are going to discuss various important provisions of fundamental rights. So, let us begin. Before enactment of Indian Constitution, there were some rights. राजे महाराजाओं के टाइम पे कुछ ऐसे अधिकार हमारी जनता को दिए जाते थे जो फंडामेंटली एक्सेप्टेड थे। सब एक्सेप्ट करते थे कि दीज आर राइट्स ऑफ द सिटीजंस, पर उनके पास कोई लीगल सैंक्शन नहीं थी। वो अधिकार किसको मिलेंगे या किसको नहीं मिलेंगे, ये कौन डिसाइड करता था? उस टाइम की रूलिंग अथॉरिटी। यही कारण था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को एक अलग पार्ट बना दिया गया। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सोली डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स. These fundamental rights are fundamental in nature, as the name suggests. ये राइट्स बहुत ही बेसिक राइट्स, बहुत ही फंडामेंटल इन नेचर है, जो हर एक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. ऑल्सो इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने प्रेएम्बल डिस्कस करा था, हमने डिस्कस करा था कि फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन दे फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, किसको मिलेंगे, ये सब तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड करा. उस टाइम पे हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी सोचा कि ये फंडामेंटल राइट्स तो हमने बना दी, अब ये राइट्स किसको मिलेंगे हमने ये भी देख लिया. अब ये राइट्स किसके खिलाफ है वो जानना बड़ा मुश्किल था, और हमें ये जानने की जरूरत भी है क्या जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हम इन्फोर्स किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, या वो कौन सी अथॉरिटी है जिसको हमारे फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखना है, जिसको ये ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज ना हो जाए, जिसको एक टाइम के ऊपर हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड तो करना ही है. उसको हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड तो करना ही है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि वो खुद हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज ना कर दे. राइट? तो वो अथॉरिटी कौन है? वो अथॉरिटी है स्टेट. तो वो अथॉरिटी है स्टेट. अब द वेरी फर्स्ट आर्टिकल इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस व्हाट इज स्टेट. काफी बार काफी एग्जामिनेशंस में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि स्टेट वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में डिफाइन करा गया. राइट? क्या फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल है, या स्टेट ही उसको सेफगार्ड करेगी, या वो सबके लिए?
अब फॉर एग्जाम्पल, माई राइट इज ड्यूटी ऑफ समवन एल्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मेरा घर, मैं घर से बाहर निकलता हूं और मेरा कम्यूट टू वर्क, जो रास्ता है जहां से मैं चल के जाता हूं, दैट इज माई राइट टू वे और राइट टू पास फ्रॉम द रोड, फ्रॉम द स्ट्रीट. इट इज ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी अदर पर्सन कि वो मेरे रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना करे. तो इस तरीके से स्टेट के ऊपर एक ड्यूटी है. बेसिकली स्टेट को पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करने का मतलब था. स्टेट वर्ड का आर्टिकल 12 में जो मीनिंग बताया जाएगा वो केवल और केवल पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे ही एप्लीकेबल होगा, राइट? तो लेट अस बिगिन विद आर्टिकल 12 that defines state. In this part, unless the context otherwise requires, right? In this part, unless the context otherwise requires, the state includes the government and parliament of India and the government and the legislature of each of the states, right? And all local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India. तो सबसे पहले स्टेट में क्या है? स्टेट के अंदर आ गई गवर्नमेंट और पार्लियामेंट. एट द सेंटर लेवल, सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेचर है और सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है. देन नेक्स्ट स्टेट के अंदर आया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स. अब स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर है वो भी इसके अंदर आएंगे. इसके अलावा हमारी जो लोकल अथॉरिटीज या अदर अथॉरिटीज वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएंगे, या वो वाली ऐसी अथॉरिटीज जो हमारी गवर्नमेंट के अंदर आ जाएंगी. और इंडियन टेरिटरी के अंदर, सो ऑल द लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो बेसिकली सेंट्रल लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल के ऊपर जो लेजिस्लेचर है, दैट इज योर पार्लियामेंट. स्टेट लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल के ऊपर जो लेजिस्लेचर है, ये तो स्टेट के अंदर आएंगे ही आएंगे. उसके अलावा आपकी लोकल और अदर अथॉरिटीज, दैट इज योर म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, ये वाली सारी अथॉरिटीज स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएंगी. ऑल द अथॉरिटीज दैट हैव द पावर ऑफ गवर्नेंस और टू लेजिस्लेट, राइट? या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या इंडियन टेरिटरी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है, राइट? दिस इज योर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो नेक्स्ट इज आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट लॉज इनकंसिस्टेंट विद or and derogation with the fundamental rights. तो framers of the constitution at the time of framing the fundamental rights, fundamental rights बनाने से पहले उनके दिमाग में यही आया कि हाँ हम fundamental rights तो बना रहे हैं, आगे जाके सरकारों की जो भी सरकारें आएंगी, कोई भी सरकार आ सकती है और उनके ऊपर we can't assure कि वो fundamental rights जो हैं वो सिटीजन्स को अश्योर करवाएंगे या नहीं.
those authorities or those governments can make laws that are inconsistent with the fundamental rights. तो क्या होगा ऐसे लॉस का जो फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट है या जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ही वायलेट कर रहे हैं. तो बेसिकली द नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द लॉज that are made by the legislature which are inconsistent or in derogation with the fundamental rights. तो बेसिकली ऐसे लॉज जो आपके फंडामेंटल राइट को सुपरसीड कर जाएं, उसको इन्फ्रिंज कर जाएं, राइट, तो ऐसे लॉज के साथ ये वाला आर्टिकल जो है डील करेगा. Clause 1 of Article 13, it says all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of the Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. तो बेसिकली आर्टिकल 13 के दो पार्ट्स में क्लॉज 1 की हम बात कर रहे हैं. तो ये क्लॉज 1 बात कर रहा है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की. तो ऐसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स को आपके जो बेसिक राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए इनसे इनकंसिस्टेंट हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, ऐसे के ऐसे सारे लॉज जो हैं वो वॉइड हैं. तो आपके वो वाले सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करेंगे, दोज लॉज आर वॉइड. वो लॉ नहीं माना जाएगा. अब बेसिकली क्या मतलब बनेगा अगर मान लीजिए एक लॉ है, ये दिस इज योर लॉ एंड दिस लॉ कंटेन्स प्रोविजन दिस एंड दिस. इसकी ये वाली प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, बस ये वाली प्रोविजन इन्फ्रिंज कर रही है. तो क्या हम पूरे ही पूरे लॉ को वॉइड करार दे दें? पूरे के पूरे लॉ को हम वॉइड कह दें? नहीं. तो ये वाला पार्ट जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, इन्फ्रिंज करेगा, सिर्फ इतना हिस्सा माना जाएगा कि ये एग्जिस्टेंस में है ही नहीं. बाकी का सारा लॉ इज गुड, राइट. Then next, the second clause, the state shall not make any law which takes away or abrogates the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void. अब ये तो थी बात प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की. अब बात करेंगे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की. क्या होगा? अब मान लीजिए जो पहले लॉज बने हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, अगर उस लॉ की किसी प्रोविजन ने हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया तो वो प्रोविजन जो है खत्म. अब हो सकता है कि जो अगली सरकार आए आफ्टर एनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज योर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अगर सरकार कोई ऐसा लॉ लाती है जो आपका फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा, तो उस लॉ की वो वाली प्रोविजन जो फंडामेंटल राइट्स के साथ नहीं मैच कर रही, जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रही है, वो प्रोविजन उड़ा दी जाए. वो मान लीजिए वो है ही नहीं, दैट इज वाइड ऑटोमेटिकली.
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऑटोमेटिक बटन दिया गया, एक ऑटोमेटिक बटन दिया गया जिस तरीके से अगर कोई ऐसा लॉ बनाया जाएगा या कोई एग्जिस्टेंस में ऐसा लॉ है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, वो लॉ माना ही ना जाएगा। अब इस प्रोविजंस के पास हमारे दो डॉक्ट्राइन निकलते हैं। यू कैन नेम दोस डॉक्ट्राइन्स as doctrine of separation and doctrine of eclipse. तो what the doctrine of separation says? Doctrine of separation says कि अगर किसी लॉ का ऐसा हिस्सा जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, हम उस हिस्से को अलग कर सकते हैं। उस लॉ से उस हिस्से को अलग कर दें तो वो जो लॉ बच गया जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा, दैट इज गुड इनफ, दैट इज वैलिड। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स से कि अगर किसी लॉ का कुछ ऐसा हिस्सा जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है उसको हम उड़ा दें, पर उसको उड़ाने के बाद उस लॉ का ही कोई मतलब नहीं रहेगा, तो पूरा का पूरा लॉ ही इनवैलिड। फॉर एग्जांपल जो मोटर व्हीकल एक्ट था, उसमें जो पुराना मोटर व्हीकल एक्ट था उसमें कुछ प्रोविजंस थी जो स्टेट को बहुत सारी पावर्स दे रही थी टू मोनोपोलाइज द बिजनेस or to control who can enter into this business। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 को इन्फ्रिंज कर रहे थे। तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा लॉ जो है वो वॉइड हो गया, वो खत्म हो गया। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करिए जिससे कि वो लॉ जो है वो दोबारा रिवाइव हो जाएंगे। अब मान लीजिए डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन या डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स से किसी लॉ की कोई प्रोविजन या पूरा का पूरा लॉ इनवैलिडेट हो गया, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दी जाए उसके बाद ये जिस प्रोविजन को या पूरे के पूरे लॉ को हमने इनऑपरेटिव कर दिया था वो दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे, राइट। तो that was your doctrine of eclipse and doctrine of separation. Then next, clause 3. In this article, unless the context otherwise requires, अब explanation एक तरीके से clause 3 में दी। Law includes any ordinance, order, bylaws, rules, regulations, notifications, custom or usage having in the territory of India the force of law। अब law वर्ड की डेफिनेशन क्या है? हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कई बार अपनी जजमेंट्स में लॉ को डिफाइन करा इन कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 3 दैट व्हाट लॉ इज। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लॉ इंक्लूड करता है अपने अंदर ऑर्डिनेंसेस, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस या ऐसी सारी चीजें। पर ऐसे ऑर्डिनेंस या ऐसे रूल्स या ऐसी रेगुलेशंस जो केवल इंस्ट्रक्शंस के लिए हैं, जो केवल इंस्ट्रक्शंस प्रदान कर रही हैं, वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, राइट। तो मीनिंग इज क्लियर देयर बाय। क्लॉज बी, laws enforced includes laws passed by or made by a legislature or other competent authority। अब लॉ कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर बनाएगी या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से
कंपिटेंट अथॉरिटी बनाएगी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas. So very clear the meaning in itself. Clause 4. Nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under Article 368. तो क्लॉज 4 में क्लियरली बोल दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट इज क्लॉज 4, इसमें क्लियरली बोल दिया गया कि 368 के अंदर अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करी, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप अमेंड कर रहे हो, that is not law. So what was the fun of making this provision in the constitution? Basically हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में भी पढ़ा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कुछ चेन ऑफ केसेस you just have to remember. सबसे पहले आया था शंकरी प्रसाद केस, फिर आया था गोलकनाथ केस, then after your केशवानंद भारती केस, जिसमें बार बार ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ है कि नहीं। जो क्लॉज 4 है उसमें बेसिकली ये बता दिया गया कि अगर पार्लियामेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, बेसिकली आर्टिकल 368 confers the power on the parliament only, that is why I am using the word parliament. तो अगर पार्लियामेंट uses this power to amend the constitution that infringes fundamental rights, there should be reasonableness in the law why the fundamental rights are taken away. Fundamental rights are guaranteed by the state, but reasonable restrictions can be imposed. तो parliament may by law or by the constitutional amendment can infringe the fundamental rights. तो बेसिकली उसको लॉ की टर्म में इसलिए नहीं लाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट वो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमसे ले सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस. इन extraordinary circumstances the parliament has the power to do this. Next is your right to equality that is covered in Article 14. Equality before law. तो basically Article 14 talks about, आपने वो स्टैच्यू ऑफ लॉ देखा होगा, एक आंटी अपने हाथ में तराजू लेके, स्टैच्यू ऑफ जस्टिस यू कैन से, वो अपने हाथ में कानून का तराजू लिए आंखों पर पट्टी बांध के खड़ी. The lady is standing like this, आंखों पर पट्टी बांध के तराजू को हाथ में लिए. तो what does that mean? वो आंखों के ऊपर जो पट्टी है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है everyone is equal before law. The state shall not deny to any person, किसी भी पर्सन को equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India. तो बेसिकली स्टेट की ये ड्यूटी बन जाती है आर्टिकल 14 के अंदर
आर्टिकल 14 दो चीजों की बात कर रहा है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब both these principles are contrary to each other. The very first principle, equality before law, it is talking about that every person should be treated and must be treated equally before the eyes of law. There should be no biasness, right? And the second principle, equal protection of laws, it deals with providing special protection before the law to some specific categories of persons. For example, you can say there are certain laws that protect the women from domestic violence. Is there any law that protects man from domestic violence? There is a law, there is an act named as Protection of Women from Domestic Violence Act. Right? Is there any law named as Protection of Man from Domestic Violence Act? No. So the Constitution says you can make some specific laws for specific group of persons in order to treat them or in order to protect them by law. If they are not protected, you can protect them by specific legislation. You can make biasness through this provision. For example, मान लीजिए कि एक घर में 4 बच्चे हैं, one is in 12th class and second one is in class 6, the third one is newly born and the fourth one is graduate. So this principle, applying this principle, equality before law, हम सभी को एक ट्रीटमेंट देंगे। क्या सब बच्चों को एक समान खाना देंगे? सब बच्चों को एक उतनी ही जगह मिलेगी सोने के लिए जितने की एक नए जन्मे बच्चे को मिल रही है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस ऐसे ग्रुप्स की बात करेगा जो प्रोटेक्शन चाह रहे हैं उन लोगों से या ऐसी चीजों से जिनके साथ प्रताड़ना की जा रही है, और उनके लिए लॉ बनाना बहुत जरूरी है सो दैट दे कैन बी ट्रीटेड इक्वली विद अदर्स, राइट? सो दिस वाज योर आर्टिकल 14. नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 15, prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex and place of birth. So, Article 15 deals with religion, race, caste, sex and place of birth, or any of them. ये सारे के सारे प्लेस ऑफ बर्थ इंक्लूडेड, या फिर इनमें से किसी एक के आधार पे अगर किसी व्यक्ति के साथ he includes she, general clauses act says he includes she, wheresoever law के अंदर he लिखा हो she उसमें इंक्लूडेड है unless otherwise provided. तो किसी व्यक्ति या किसी औरत के साथ
रिलीजन, रेस, कास्ट, व्यक्ति और औरत की बात करी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली हम सबका ये अधिकार है कि इन चीजों के आधार पे सारी की सारी एक साथ या किसी दोनों का पेयर या किसी एक के आधार पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कोई भी नहीं करेगा। दिस इज आवर फंडामेंटल। No citizen shall on grounds of only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to। यानी कि इन सबके आधार के ऊपर किसी भी सिटीजन को कोई डिसेबिलिटी या लाइबिलिटी या किसी भी रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये कंडीशंस आर विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स, किसी दुकान में जाने के लिए, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। यानी किसी व्यक्ति विशेष को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आप किसी दुकान में जाने से, पब्लिक प्लेस पे जाने से, एंटरटेनमेंट हॉल्स में जाने से या होटल्स या रेस्टोरेंट्स में जाने से नहीं रोक सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा रेस्टोरेंट वेलकम्स ओनली मैन, because of you can't discriminate on basis of sex, you can't discriminate on basis of religion, you can't say कि this restaurant will allow the entry of only Hindu people or only to Muslim people or to any of the religion, right? Then next, the use of wells, कुएं का यूज करने से इन सबके आधार पे किसी को नहीं रोक सकते। टैंक्स, टंकी से पानी लेने के लिए, बादिंग घाट्स, जो बादिंग घाट्स देखे आपने, अब गंगा घाट है, वहां पे क्या हिंदू नहाएगा और मुस्लिम नहीं नहाएगा? ऐसा नहीं है, यू कांट डिस्क्रिमिनेट। रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ द स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। अब पब्लिक के पैसे से ऐसी कोई जगह बनाई हो, उसमें भी आप इन चीजों के आधार पे किसी को जाने से नहीं रोक सकते। Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. अब the Constituent Assembly or the framers of Constitution realized that women and children belong to the weaker section. So they kept a provision that for the protection of women and for children, it is very much important to include clause 3. So for women and children, special provisions can be made in laws, where the restrictions can be imposed for women's, like the entry or the use of that place could be by the women only or could be by the children only, right? Next is your clause 4. Nothing in this article or in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for scheduled castes and scheduled tribes. Again, for the betterment of backward classes and SCs and STs. At that time, what was the scenario? There were many atrocities, maltreatment with the backward classes. So, for the upliftment or for the purpose of equality, there should be equality, right?
For this purpose, the government can make special laws, the parliament can make special laws. There can be biasness for their upliftment. Nothing in this article or in subclause G of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially or educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste or the scheduled tribes in so far as such special provisions relate to their admission to educational institution, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state, other than the minority educational institution referred to clause 1 of article 30. So, in this clause, the Constitution intends to say, for the upliftment of the classes referred herein, special laws can be made for admissions into educational institutions, that this much quota is fixed, that this much of seats should be from the specified classes. For example, there are 100 seats. Out of them, 10 or say any number of seats could be reserved for the classes. Right? Clause 6. Nothing in this article or subclause G of clause 1 of article 19 or clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any economically weaker section of citizens other than the classes mentioned in clause 4 or 5. इसके अलावा जो ऊपर क्लासेस हमने डिस्कस करी, इसके अलावा अगर किसी और क्लास की बेटरमेंट के लिए बात करनी है तो वो भी सरकार कर सकती है. Clause B. Any special provision for the advancement of any economically weaker section of citizens other than the classes mentioned in clause 4 and 5 insofar as such special provisions relate to their admission in educational institution, including the private educational institution, whether aided or unaided by the state, either than the minority in educational institution referred to in clause 1 of article 30, which in the case of reservation would be in addition to existing reservation and subject to a maximum of 10% of the total seat in this category. Nothing much important. It talks about the reservation could be maximum 2 of 10%. Now, the explanation here. Explanation here for the purpose of this article and article 16. Economically weaker section भी यहाँ बताया गया क्या? Shall be such as may be notified by the state from time to time on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage. तो यहाँ पर economically weaker section को भी define कर दिया गया. Equality of opportunity is in your article 16. So, equality of opportunity, it means every person should have equal opportunity. For example, you are preparing for the UPSC examinations. Suppose Mr. A is also preparing for the same exam. What if the government says that we would prefer to select a candidate from the state where A resides and not from any other states? You are capable enough,
you are competent enough. He is not competent enough and he is not capable. But because of the biasness of the government is giving priority to state where A resides, and that is because A is selected. He is scoring lesser marks than you, but he is selected. So the Constitution says, Article 16, there is equality of opportunities. Equality of opportunities in matters of public employment. Clause 1 of Article 16 says, there shall be equality of opportunity for all citizens in matter relating to employment or appointment to any office under the state. Equality of opportunity. तो किसी भी सरकारी पद के लिए there is equality of opportunity to all the citizens, right? The clause 2, no citizen shall on the grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them. तो दो चीजें इसमें एक्स्ट्रा आई जो हमने पीछे पढ़ी थी, that is your descent and place of residence. Be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state. तो इन चीजों के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा. Clause 3, nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to the office under the government of or any local or other authority within a state or UT, any requirement as to residence within the state or UT prior to such employment or appointment. So, under this clause, there is a negative provision that restricts the Parliament from imposing any condition for recruitment to public service with regard to class or classes of employment under the government or any of the local authority, that residence should be in this state or should be in this state, as in our example. Now, clause 4. Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward classes of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in services under the state. अब there is a reservation process. So, in the official notification of the UPSC regarding the announcement of posts and inviting application from the candidates, you can see the total number of posts and the bifurcation of the reserved post for the quota. So basically the state is empowered to reserve the seats for the classes which in the opinion of the state are not adequately represented. मान लीजिए अब हमारी सरकार को ये लगे
कि सरकारी नौकरियों में कुछ एक क्लास के पर्सन्स, मान लीजिए आपके हरियाणा में रहने वाले जो मेल पीपल हैं, दोज आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन यूपीएससी फॉर एग्जाम्पल सेक. तो if state realizes the reason, state can make law and make provision for reservation of the class of people who are not adequately represented. Right? Earlier हमने ये देखा था कि स्टेट किसी भी आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी. अब हम ये देख रहे हैं किस आधार पे स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है. Clause 4A. Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in matters of promotion with consequential seniority to any class or classes of post in services under the state in the favor of scheduled caste and the scheduled tribes, which in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state. अब ये जो प्रोविजंस है ये प्रमोशन पर भी अप्लाई होंगे. 4B. Nothing in this article shall prevent the state from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause 4 or under clause 4A as a separate class of vacancies to be filed up in any succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filed up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year. अब बेसिकली अगर एक साल में कुछ वैकेंसीज उस रिजर्वेशन क्लास से फिलअप नहीं हुई तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके अगले ईयर या ईयर्स में लेके जाया जा सकता है. पर ध्यान ये रखा जाएगा कि उस साल में अगर दूसरी नई वैकेंसीज भी आप निकाल रहे हैं तो वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज शुड नॉट एक्सीड 50%. नेक्स्ट इज योर क्लॉज 5. Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination. तो गवर्नमेंट ये प्रोविजन नहीं बना सकती कि इस वैकेंसी को फिल करने के लिए a person we require should be from particular religion or from particular denomination. Clause 6. Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any economically weaker section of citizens other than the classes mentioned in clause 4 in addition to the existing reservation and subject to a maximum of 10% of the post to each category. अब आ गया EWS सिनेरियो में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन जो है दे दिया गया. तो बेसिकली हमने डिस्कस करा कि सरकार हमारे अधिकारों को छीन नहीं सकती. देयर शुड बी इक्वलिटी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. देयर शुड बी इक्वलिटी बिफोर लॉ. पर अब हम देख रहे हैं कि किस आधार पे हमारी सरकार जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सम वीकर सेक्शन. So basically the government can do a reasonable act
the government can do a reasonable act, and secondly, there should be a nexus of the act with the reasonability. There should be a connection that what the government has done is for the upliftment of that weaker section. That is why these provisions are made. Otherwise, what is the fun of reservation if the weaker section is not getting the benefit? Right? So, this was your Article 16 of the Constitution. आज के लेक्चर के लिए हम यहीं रुकेंगे, बाकी के आर्टिकल्स हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और आज से पहले आपने जिस तरीके को कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स को देखा होगा, आपका वो नजरिया भी बदला होगा और आई होप कि आपको आज कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। Thank you all for watching this video. In the next coming videos, when we will be completing this topic of fundamental rights of this entire part 3 of Constitution, we will be discussing many questions on fundamental rights. There are many numerous questions that could be asked from this part. This is a very important part. So I am not hurrying to put up one or two questions right now from this part. We will be elaborately discussing that how questions could be framed and how to deal with the questions from this topic or from this part. So goodbye for now. See you in the next lecture. Thank you.